Well, wonderful afternoon, my dear students of class ninth. So, this is your English teacher, and we are going to understand the poem The Snake Trying. Yes, of course, it's a very short and sweet poem, and hopefully, you will understand this poem without any kind of vague. Okay, okay. So, this poem is written by a Canadian poet, or you can say uh, geophysicist विलियम राइटन यूस्टेस रॉस. तो ये नाम याद कर लो, 1 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन आ जाएगा लग रहा है. इतना छोटा सा नाम है, विलियम राइटन यूस्टेस रॉस. इन शॉर्ट WWE रॉस. बुक में WWE रॉस दिया है, सो यू कैन रिमेंबर दैट वन. ठीक है, इस तरह के नाम हो तो कितना टाइम लगता होगा बोलने में. व्हाट्स योर नेम? Well, my name is William Wrighton Eustace Ross. मतलब एक साथ 3-4 लोगों का नाम हो गया. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. Yes, Harit, you can write WWE Ross in exam. Okay. Divya Jan has said I have just sent you the notes. Okay. Okay. I will check definitely. Well, so now uh, the title of poem is The Snake Trying. Snake trying. So what the snake is trying? The snake is trying to do something, and I hope you can guess what the snake is trying. Yes, anyone in the assembly? To escape. To escape. Good. Who is that? Sir, Harit. Okay, it is always Harit. अरे what about others? देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हाथ दिख रहा है इंसान का, और एक स्टिक है, और ये बेचारा स्नेक ग्रीन कलर का, जो कि escape भागने की कोशिश कर रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है. Well, so yes, of course, you are absolutely right, Harit. The snake is trying to escape a pursuing stick. So this is the stick, and of course, this stick is very much harmful for him. However, so let us start the poem. Before starting, okay, I would like to share some amazing facts which you may know and may not know. Okay, अभी तो पता चल जाएगा. So there are over 3,000 kinds of snakes in the world. Just imagine, 3,000 टाइप्स के जो है स्नेक्स है. एंड देयर आर अराउंड 600 स्पीसीज ऑफ वेनोमस स्नेक्स. मतलब 3,000 में से सिर्फ 600 स्पीसीज जो है वो वेनोमस है. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 20%. ठीक है, 80% स्नेक्स जो है वो नॉन वेनोमस है. बट we are often, I mean, whenever we see any snake, we we get frightened because we don't know that all snakes are not venomous. हमें क्या लगता है, whenever we see a snake, हमें लगता है कि ये venomous है, so इसे मार देना चाहिए, है ना. So that is the general issue with us, or you can say general thing with us. Okay, but don't worry, only 20% snakes are venomous. Next, थर्ड वाला जो है बड़ा अमेजिंग टाइप का है. जनरली वी नो दैट कि स्नेक्स जो है वो अपना ऑफस्प्रिंग जो है वो एग के जरिए होता है. मतलब अ स्नेक डजंट गिव बर्थ, है ना. बट एक रसल्स वाइपर करके एक स्पेशल टाइप के स्नेक है, जो कि मतलब बच्चों को एक एक उनके एक्चुअली उनके शरीर में ही हैच हो जाता है. तो रसल्स वाइपर एग रिलीज नहीं करता है, सीधा स्नेक को रिलीज करता है. सो दैट इज क्वाइट अम्यूजिंग एंड समथिंग डिफरेंट, एक्सेप्शनल. फोर्थ, आई होप यू नो दिस, दे स्मेल विद देयर टंग्स. यस, स्नेक के पास नाक नहीं होता है, और
उन लोग जो साउंड को सुनते हैं वो एक्चुअली स्किन से वाइब्रेशन ऑफ द आई मीन स्नेक जो है वो वाइब्रेशन को फील करके सुनता है. नेक्स्ट, snake can open their mouths up to 150 degree. That's why a snake can eat a large animal, जो कि उसके उसके बॉडी से कम ट्वाइस थ्राइस बिगर है, फिर भी वो उसे swallow कर सकता है. That's because why? Because a snake can open their mouth up to 150 degree. Just imagine. ठीक है, 180 डिग्री. हाँ. Yes, someone's mic is on, and yes, Shrehil. Shrehil, are you there, Shrehil? Shrehil Malu. Okay, I don't know what he is doing. Let me mute you all. Okay, so these are the few amazing facts, and the most important fact which we need to understand, that is only 600 species are venomous. Okay, so and one more thing, a snake is not dangerous until it's frightened. ठीक है, जब तक वो आप स्नेक को डराओगे नहीं तब तक वो आपके लिए कोई खतरा नहीं है. ठीक है, वो जानबूझ के आपको कभी बाइट नहीं करता. ठीक, नेक्स्ट अब शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं. ओके, सो यस, सी, लाइक अ डायरेक्टर, film director. Yeah. So William Wrighton Eustace Ross was a Canadian geophysicist and poet. He was the first published poet in Canada's to write Imagist poetry, and later the first to write Surrealist verse, both of which have led some to call him the first modern Canadian poet. Okay, so here you can see two new words, Imagist and Surrealist. Surrealist का मतलब होता है कि you must have seen, कुछ illusions होते हैं पेंटिंग में, ड्राइंग पेंटिंग में कुछ इल्यूजन्स होते हैं. जैसे वक्त बीतते जाता है तो उसको ड्राइंग में कैसे समझाता है, एक वो क्लॉक बना दिया, उस क्लॉक को पिघलाते हुए दिखा रहा है. तो वो जो इल्यूजन है, वो जो आर्ट आर्ट है, दैट इज कॉल्ड सरिलियस्ट. ठीक है, और इमेजिस्ट एक मूवमेंट है एक्चुअली. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट? सी माय डियर स्टूडेंट्स, पोम या एनी स्टोरी और एनी राइम्स, पहले जब ये सब लिखा जाता था, है ना, ये सब सोसाइटी के सोसाइटी में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ये सब पोम लिखा जाया करता था. इवन दिस पोम इज जस्ट टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ दैट all snakes are not harmful. You must not kill the snake as you see. Okay, we often do this. Whenever we see any snake, we kill them. Okay, but the poet is saying ki no, you must not. Just like the killing tree. Okay, the poet is saying how to kill a tree, but that doesn't mean that he is saying to kill tree, है ना. तो इमेजिस्ट एक मूवमेंट है 20th सेंचुरी का, एंड यू कैन से मूवमेंट ऑफ लिटरेचर. ठीक है. वेल, सो W.E. Ross is considered the first modern Canadian poet. Okay, so this much is sufficient. Now let us get the introduction of the poem. And अगर आप इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है तो आप पोम को भी बहुत इजीली समझ लोगे. It will be easier to understand. Well, so what is the introduction? You can see in the poem, the poet says that the snake tries to escape from being hit by the stick held by a person who is trying to kill it. The poet wants to say that
all snakes are not harmful. Yes, that I have already shared with you. Okay. And see why this poem has written, of course, to change our mentality, of course, to change our thinking process. And that's why poem stories used to be written. Nowadays, we are not much concerned on this, and nowadays people are not also much concerned to read. पहले जमाने में reading, it was a popular thing, and people used to do it pleasurably. ठीक है, बट आजकल तो खैर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से टाइम मिले तब तो पढ़े. However, आगे बढ़ते हैं. Humans have a notion मतलब एक चिंताधारा, या बोल सकते हो आइडिया, या prediction. Humans have a notion that snakes are dangerous and try to kill them as soon as they spot. Okay, as soon as they spot one. But this is not true. मतलब all snakes are not dangerous. As you could see in the previous slide, 3000 में से सिर्फ 700 जो है वो venomous है, 600 के आसपास, बाकी non venomous है. It tells us how a harmful green colored snake tries to hide behind the green bushes in order to save itself. Yes, so this line says that we human beings have started to feel that we are the living beings to be alive in the planet. ठीक है, मतलब इजीली कहा जाए तो एक्सेप्ट ह्यूमन किसी को भी इस अर्थ में रहने का परमिशन नहीं है. ठीक है, a snake, of course, a snake is also part of this earth and he has the right to live. No one can't kill him. तो यहाँ पर स्नेक को, एक छोटा सा ग्रीन कलर के स्नेक को, उसे छुपना पड़ रहा है. The snake tries to hide because to save its life. उसे अपना लाइफ को बचाना है. ठीक है. So that is the thing which the poet has tried to express in his poem, and let us see how is his poem. Yes, here the poem starts. This is the first stanza with 5 lines, and I think you can notice that it has not any kind of rhyme. Okay, if you see the last word of every line, no sound matching is there. Trying, stick, thin, beautiful shapes. So it is called free verse poem. Okay, it is called free verse poem. Well, now I will definitely explain, but I want you to recite the poem. So who will start today? Yes, anyone voluntarily, or otherwise I will ask you to recite the poem. Okay, so till now no student has given any response. Well, so Acha, Harit is there. Okay, why only Harit every time? Just a minute, Harit, don't worry, I will definitely give you chance. But now I would like to ask Kalp. Kalp Kochar, unmute yourself. Miti, be ready for the next slide. Yes, Kalp, where are you? Are you there, or I think he is not there? Very bad. Okay, so let Miti recite this. Yes, Miti, you can start. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. Okay.
Yes, Harit, also you can recite it again. Yes, Harit. Yes, sir. Yeah. The snake trying to escape and the pursuing skid with sudden carving of skin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. Okay. So you can see that only two lines are there from here, the snake to body and how beautiful to shapes. So two lines. एंड यू नो दैट कि पोम में ऐसा होता है, लाइन को ब्रेक किया जाता है, और जहां लाइन ब्रेक होता है उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? एनीवन कैन से? जहां लाइन ब्रेक होता है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इट इज? Embellishment. Embellishment. Enjambment. Yes, enjambment. Yes, sir. Okay. So the snake trying to escape the pursuing stick with sudden carving and thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. Okay, so what does mean by pursuing? Pursuing means chasing or following. Curvings means twisting. You know that a snake, how does a snake move? And graceful means elegant, lovely. So here the poet is saying कि एक snake है जो भागने की कोशिश कर रहा है by twisting his body. ठीक है, और किससे भागने की कोशिश कर रहा है? एक स्टिक है, और ऑफ कोर्स दिस स्टिक इज नॉट गोइंग टू वेलकम द स्नेक or not going to praise the snake. This stick will definitely kill him. So that's why, and of course, the stick is being held, I mean, it is being operated by, of course, a human. ठीक है, तो the snake is trying to escape, and who is the reason behind it? Of course, we human. And in the last line he says how beautiful and graceful are his shapes. So the shape of snake is very graceful, elegant, lovely, beautiful to the poet. And of course it is not like that ki it must be to the poet only. We also must think that ki, yes, of course, a snake is a beautiful part of our nature and we must not kill them. ठीक है, next slide. Okay, so now, yes, who is going to recite? Sheetal, are you there, Sheetal? Yes, sir. Okay, recite this. Yes, Sheetal, you need to unmute your mic and just you need to recite the stanza. Please tell me. Okay. Okay, is it? Okay, so Sakshi, Yes, sir. yeah, recite the stanza. Yes, sir. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Okay, so do you support the perspective of the poet? Yes, Sakshi, don't mute yourself. Yes, sir. Okay, you support. Okay. Okay, so just explain in your own word this stanza. You can see the meaning. Glides means moves, stroke means Yes, sir. Yes, sir. stick, and reads means you can see the image. Okay. Okay, sir. So what to do, please will you tell again?
You need to just explain what is. Okay, sir. So the poet is trying to say that snake goes to water away from hitting to the stick. So he's asking people, means us, to let him go into the water without any hurt, and he is not harmless to children, small children also. Okay, that means we need not to worry, or we need not to be feared of is it? Yes, sir. Yes, correct. So see my dear students, जब आप स्नेक को मारने की कोशिश करोगे, ऑफ कोर्स एनिमल्स के पास भी एक इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है, जैसे हमारे अंदर इंस्टिंक्ट होता है, जैसे कुछ कोई अगर आपको मारने जाता है तो आप हाथ उठा लेते हो ना, या कुछ आंखों में आके गिरने लगता है तो आंखें ऑलरेडी बंद हो जाती है, तो दीज आर कॉल्ड इंस्टिंक्ट. स्नेक्स, नॉट इवन स्नेक्स, ऑलमोस्ट एवरी एनिमल्स दे आर हैविंग द इंस्टिंक्ट. तो अगर आप स्नेक को स्टिक लेके दौड़ाओगे तो ऑफ कोर्स द स्नेक विल नॉट स्टे ओवर देयर, द स्नेक विल गो अवे फ्रॉम यू, ठीक है. So here it is said कि he glides through the water away from the stroke. मतलब अभी जस्ट इमेजिन कि आप स्नेक्स जो है बेसिकली वो किसी नाले के पास या कहीं कहीं में पानी है, वहाँ स्नेक्स को ज़्यादा पाया जाता है. तो जस्ट इमेजिन एक स्नेक है जो पानी से बाहर आया हुआ है और आप उसे स्टिक से मारने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू kill the snake, then what the snake will do? Of course, it will go into the water again and it will try to hide. ठीक है, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो वही कर रहे हैं. The snake is doing that. Poet is saying, oh, let him go over the water into the reeds to hide. So here you can see the picture of bushes, इसे reeds कहते हैं, ठीक है. तो स्नेक को अगर बचना है, इफ द स्नेक वांट्स टू वांट्स टू बी अलाइव, देन स्नेक को क्या करना होगा, ही नीड्स टू हाइड. तो वो रीड्स के अंदर जाके छुप जाएगा. और पोएट कह रहे कि ऐसा करने दो, लेट हिम डू दैट. दैट मीन्स द पोएट वांट्स टू सेव अ ब्यूटिफुल स्नेक, ठीक है, विदाउट हर्ट. Small and green, he is harmless even to children. मतलब बच्चों को भी सांप से कोई खतरा नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है. हालांकि वेनमस स्नेक से तभी आपको खतरा है जब आप उसे इरिटेट करोगे या जब आप उसे परेशान करोगे, ऑफ कोर्स देन ओनली द स्नेक विल बाइट यू, ठीक है. सो न्यू वर्ड्स में ग्लाइड्स था. ग्लाइड्स का मतलब मूव. You must have seen a snake moving into the water. बहुत अच्छे से वो तैरता है, बहुत खूबसूरत लगता है उसका मूवमेंट, इन अ zigzag वे, ठीक है. और स्ट्रोक मतलब क्या था, हिटिंग ऑफ द स्टिक. कोई तो स्टिक लेके सांप को मारने जा रहा है. और रीड्स यू कैन सी, है ना, वाटर और मार्श प्लांट्स विथ थिक स्टेम. Okay, so now we are moving to the last stanza. Okay, then we will come to know about the poetic devices or figure of speech. Okay, the last stanza says, along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. See, yes, of course, जैसे कि मैंने कहा, जस्ट इमेजिन कि एक लेक है और उस लेक के चारों तरफ सैंड है, ठीक है, और कुछ रीड्स है पानी में, है ना. तो जहाँ रीड्स होता है पानी, वहाँ कम गहरा होता है, और जस्ट उसी के उस पानी के साइड में जहाँ सैंड है, वहां पर कोई सांप बैठा हुआ है, या बैठा तो नहीं होता है, लेटा हुआ है, ले. सो द स्नेक, ओके, along the sand he lay until observed, मतलब जब तक
कोई उस सांप को नहीं देखता है या जब तक उसे चेज नहीं करता है कोई इंसान, एनी ह्यूमन, तब तक वो मस्त सैंड में लेटा हुआ रहता है, आराम करता रहता है, टेक्स रेस्ट, है ना. When someone observes or when someone chases with a stick, what the snake does, the snake vanishes in the ripples. Ripples मतलब होता है small waves. So you can see ये जो लेक का एक पिक्चर है, छोटे छोटे लहर है, उस लहरों में वो सांप जाके गायब हो जाता है. vanishes मतलब disappears among the green slim reeds. ठीक है. So see, just imagine, I mean, just you put yourself at the place of snake. Would you like to lead such kind of life? डर डर के? Of course not. Of course not. No one will like to live like this way. Okay. So that concern, actually, that concern the poet wants to develop inside our mind. Okay. And every living being has the right to live in this vast world. Okay. Okay, so I hope the poem is clear to you. Very short poem, and but the message is very loud and clear. And of course, we must show our concern to this kind of, you can say, ill treatment. ठीक है, ill treatment to the snake. So it is not only for the snake, actually. We often harm many different types of living beings. We must stop that. Okay, now figure of speech. So first stanza, the snake trying to escape the pursuing stick. ये एक लाइन है, लेकिन यहाँ से लाइन ब्रेक हुआ है और इसे हम लोग कहेंगे enjambment. ठीक है. Then to escape the pursuing stick. Pursuing stick. So stick is a noun and pursuing adjective. तो जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखे आपको, pursuing stick, sleepless night, ठीक है, उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, और कोई आ रहा है आपके दिमाग में तो बताओ. सो pursuing stick, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. क्लियर? मतलब एक एडजेक्टिव होगा और उस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होगा, उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट. यस, हैप्पी बर्थडे, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट. गुड हरित. ठीक है. स्लीपिंग बेबी, क्राइंग गर्ल, ठीक है. प्लेइंग, नहीं तो प्लेइंग के साथ क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगा सकते. ठीक है. So this is called transferred epithet. याद रखना. Next, with sudden carving of thin long body, again line break. So enjambment. Okay, how beautiful and graceful are his shapes. So यहाँ पर assonance का आप देख सकते हो use and grace, shapes. So vowel sound is repeated, so it can be considered as assonance. In the first, in the second last line also you can say long, oh, body, how. So it can be enjambment and it can be assonance also. Second stanza, he glides through the water away, alliteration. यहाँ पर T sound repeat हुआ है through the, ठीक है. From the stroke, oh, let him go, again enjambment. Over the water, यहाँ पर O sound है, sound है, तो assonance you can consider. Into the reeds, to hide. यहाँ alliteration भी है, T sound repeat हुआ है, तो you can say alliteration also. Here again enjambment, and in the last line H sound is repeated. He is harmless, he harmless, so alliteration. Okay, now this is your task. Tell me,
What will be the figure of speech of first line? Along the sand, he lay until observed and chased away. And now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Yes, so tell me. So consider this is A, B, C, D, E. So what is the figure of speech of A? Along the sand he lay until observed. Yes, I'm waiting for your answer. हाँ, फर्स्ट का आंसर सही आया है, ओनली फ्रॉम हरित। बाकी लोग मेरे को लग रहा है नींद आ गया तो सो गए होंगे उन लोग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेक अप, सी। हाँ ओके ऋषिका, बोलिए। okay, so do one thing, take a screenshot and then find the figure of speech, and in exam one question will be from figure of speech. That is obvious, there will be definitely one question on figure of speech, so take it very seriously. And Sir, from which form? who is that? Sir, Gaurav. Yes beta bolo. Sir, from which form? Which poem? Yes, sir. How can I say beta, that is part of examination na, paper का part. Yes, sir. सिलेबस तो मिल गया है, पढ़ लो अब उस सिलेबस को। Yes, sir. Okay. Okay then, bye, good day, see you tomorrow. Bye, sir.